Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel, Adarshale. So today's topic is multidisciplinary nature of environmental studies, a topic or a series of classes or videos I have started on the request of the bunch of students of EVS, that is environmental science. This is a science that has been made mandatory for all the faculties, especially where in the areas where I live. And so far as I know, multi-level पे national level पर भी ये graduation level पे must किया गया है EVS. EVS में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स मैं देखती हूँ कितना कवर कर सकती हूँ, but some important topics I'm creating a series. So the first in the series is multidisciplinary, as the name says, multidisciplinary. कितने सारे studies के disciplines हैं, sciences के disciplines हैं जिनको हम environmental studies से link कर सकते हैं. और अगर truly देखें तो environment वो चीज है, वो जगह है, वो atmosphere है, वो वातावरण है, वो पर्यावरण है जिसके अंदर हम रह रहे हैं. तो नेचुरली उस पर्यावरण को इंक्लूड करता है जमीन, हवा, जल, वायु, सब कुछ एनवायरनमेंट में आता है. तो हर चीज जो एनवायरनमेंट से या ह्यूमन से रिलेटेड है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जैविक चीजें हो, चाहे वो अजैविक चीजें हो, बायोटिक हो, नॉन बायोटिक हो. और आज के साइंस से जितने तरह की साइंस डेवलप हो रही है, मेडिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, एटमॉस्फेरिक साइंस हो, अर्थ साइंस हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, मेडिकल साइंस, जितने भी पढ़ाई के एरियाज हैं, नॉलेज के एरियाज हैं, हर एरिया से एनवायरनमेंट कनेक्टेड है. ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एनवायरनमेंट पर अगर इंट्रोडक्शन हम देखना शुरू करें तो इट विल बी अनलिमिटेड. सो आई स्टार्ट विथ, आई एम जस्ट गिविंग यू इन वन लाइन. ऑफ कोर्स मैं बीच बीच में हिंदी में भी कोशिश कर रही हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स में किसी को तकलीफ नहीं हो. So environment is the complex of physical, chemical and biotic factors that include climate, soil and living things that act upon an organism or an ecological community, ultimately determining its form and survival. That may be defined environment in one line. तो इन्हें अगर हम हिंदी में देखें तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत, दैट इज कंबाइंड इकाई है जो किसी लिविंग और इकोसिस्टम को प्रभावित करता है. जो इकोसिस्टम जो इसको हम परितंत्रीय आबादी हिंदी में कहते हैं, डिफिकल्ट टर्म. इकोसिस्टम से मुझे लगता है अब ज्यादा समझ में आएगा. तथा उनके रूप, जीवन और जीविता या बायोसिस को तय करता है. एनवायरमेंटल साइंस तीन मुख्य इंक्लूड करता है फैक्टर्स. फर्स्ट इज फिजिकल एंड नेचुरल, दैट इंक्लूड्स वाटर, फूड, एयर, सॉइल, नॉइज, हीट, लाइट, रिवर, माउंटेन, मिनरल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड and so on, जितनी भी चीजें आती हैं. Then the second important category is the biotic, that includes all the living things, animals, plants, microbes, everything that are included in the living things. And then is the psychosocial elements or the psychosocial factors, that includes the social relationships, economical, cultural, political, spiritual, related to family, society, state, intermediate relationships, social relationships, everything related to life of a human can be related in one or another way with the environment. To summarize, अगर हम summarize करें तो environmental studies include the botany, zoology, anthropology, physics, chemistry, meteorology, that is the मौसम विज्ञान जिसको हम कहते हैं, geology, geography, economics, political science, sociology, history, law, medical science, statistics, computer science, information technology, and a number of more
study areas that I have just mentioned in the last slide, that include the earth science, atmospheric science, nanotechnology, and engineering factors, education, moral and ethical fields, mass communication and journalism, and so on and so forth. So that some of the areas we haven't seen in details, but we are aware of all these factors. So to start with the botany and zoology, the botany zoology includes the combined study of the all living things. Of course, यहाँ पे microbiology भी होना चाहिए था जो छूटा हुआ, that I have mentioned in this last slide. So let us see one by one जितने भी factors हैं हम शुरू करते हैं, जो अब एकदम सीरियली जैसे यहाँ मेंशन किए हुए हैं वैसे ही मैंने टॉपिक्स को नहीं लिया है. मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले डिस्कस कर लें. सो एनीवे, मीटियोरोलॉजी, दैट इज द वेदर साइंस, मौसम विभाग. मौसम से रिलेटेड साइंस तो अंडरस्टूड, कैन बी वेल अंडरस्टूड कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. दैट फैक्टर्स ग्रेटली इफेक्ट द एनवायरनमेंट इंक्लूड स्टडी ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, रेन, snowfall, hailstorm, forest, fog, all fires, wildfires, all so many factors are included in meteorology. Then is the geography. It is the study of relationship between environment and man. Geography मतलब भूगोल, पृथ्वी की जो गोल पृथ्वी है उस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशनशिप लिविंग बीइंग के साथ. खास तौर से जब हम साइंस पढ़ते हैं तो मैन ने ही बनाया है, तो हर रिलेशनशिप अल्टीमेटली जोड़ता है विद द ह्यूमन लाइफ. तो ह्यूमन लाइफ के साथ क्या क्या एस्पेक्ट्स रिलेटेड हैं, और ज्योग्राफी में अब एक पूरा ब्रांच बन गया है. एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को इतना ज्यादा रिलेटेड पाया गया एनवायरमेंट से कि एक बिल्कुल सेपरेट ब्रांच बनाया गया है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, that deals with the understanding and evaluating the ecological system and socio-cultural relationship. You all know what is geography. Sorry. Then is the political science. ये आज के फैकल्टीज हैं, बट जो एनवायरनमेंट, जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप एनवायरनमेंट के हित के लिए, ह्यूमन के हित के लिए एनवायरनमेंट से नहीं जोड़ सकती हैं. Political science deals with environmental relationship and natural conditions, resources, soil fertility, population, coastal conditions, political structure, forms and functioning of government. Politics और राजनीति, सोसाइटी का जो प्रेजेंट फॉर्म है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें आप उसमें पढ़ती हैं, और वो एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड हैं वो एनवायरमेंटल साइंस में हम पढ़ते हैं. Then is the anthropology, is the study of human traits. Anthropology मानव विज्ञान एक एस्पेक्ट है जो एनवायरनमेंट से डेफिनेटली क्लोजली रिलेटेड है. It deals with the human traits, biological and psychological well-being, communities and cultures, and growth and evolution of human. Environmental science is connected to anthropology since it studies human and their environment throughout place and time. Then comes the biology, that includes the botany, zoology and microbes. Botany is the science of the plants, plants से related science है. Zoology animals से related science है, और microbes miniatures microscopic animals से related science है. So it is the field of science focusing on study of living creatures and their physical structure, chemical processes, molecular interactions, development, evolutions. Everything is included in the environmental science. Environmental science is connected to biology. It is connected with the natural environment of all living creatures. Then is the chemistry. Chemistry is a science that deals with the composition of air, water, soil, different types of gases, effects of rainwater, various gaseous cycles, that is oxygen cycle, nitrogen cycle, carbon dioxide cycle, and so on and so forth, going on in ecosystem, making us understand the various types of environmental pollutions like water pollution, air pollution, soil pollution, on flora and fauna. Flora and fauna पर इन pollutions का, इन प्रदूषण का क्या असर होता है, वो chemistry में, chemical structures में deal करते हैं. Then comes the physics and environment. और okay,
here it is written computers and IT. So let's go. Computer and IT आज का सब्जेक्ट है, बहुत समय से रिलेटेड नहीं है, बहुत पास्ट एंशिएंट सब्जेक्ट नहीं है, बट वी कैन वेल अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर और आईटी के बगैर तो अब दुनिया ही नहीं है। और एनवायरनमेंट कंप्यूटर आईटी से कैसे जुड़ा है, इसके बारे में अगर लैंग्वेज हम बताने लगे तो इट विल बी अनलिमिटेड। तो एक लाइन में, एज द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस कंप्यूटर हैव बिकम नीड फॉर एवरीवन। Computers used for the by the Environmental Protection Agency to keep track of pollutants found in soil and water. This is just one point. आप अपना लैंग्वेज जितना दे सकती हैं दीजिए। कंप्यूटर और आईटी और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म आज की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो एनवायरनमेंट के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने रिलेटेड टॉपिक्स हैं, दैट यू नो। You can give your own language. Then comes the geology. It is the study of physical structures and substances found on Earth, as well as their history and processes that go through. Geology का हिंदी में मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, geology deals with those things, and it is very closely related to the changes in Earth crust. पृथ्वी के अंदर अर्थ के क्रस्ट में it how the changes affect the environment of biosphere. There are many types of rocks and minerals found in sufficient quantities in Earth's crust, and the geology deals with those things. The internal forces and external forces help in starting the biogeochemical cycles by breaking these rocks found in the Earth's crust. Hence, geoscience study is a great importance for studying environmental science. Then, हिंदी में अगर थोड़ा सा मैं बता दूं, भूगर्भ में होने वाले बदलाव जैवमंडल के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और भूगर्भ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टाने और मिनरल्स पाए जाते हैं। आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां इन चट्टानों में विखंडन करके जैव भू रसायन, दैट इज द बायोस्फेरिक चेंजेस क्रिएट करती हैं, और इनको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। सो इस तरह से जियोलॉजी एनवायरनमेंट को समझने में सहायता करता है। देन कम्स द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और पर्यावरण विभाग बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। Various economic activities have good or bad or adverse effects on environment. In the blind race of modernization and development, ignoring the environmental betterment, affecting the economy worstly or very badly. In discriminating matters, the exploitation is being done of natural resources, causing the degradation of environment very badly, and in turn affecting the economic conditions of the society. हम जहाँ हैं, चाहे वो मेरी सोसाइटी हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, नेशन हो, इंटरनेशनल स्टेज पर जितना ज़्यादा हम वायलेशन कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के इफेक्ट में, उतना ज़्यादा इकोनॉमी को हम बैडली इफेक्ट कर रहे हैं। There should be a balance between environment and economical conditions that will bring a balanced environmental conditions. So this is the economics related with the environment. Then is physics, a field of science examining energy and matter in space and time, as well as their interactions It is concerned with energy conservation, atmospheric modeling, and many more environmental conditions like temperature, light, radioactivity, sound, etc., which affect the environment deeply. Different measures to reduce the thermal or noise pollutions and other type of pollutions are involved greatly with physics and its different aspects that affect directly or indirectly the environment. Then is the sociology. Sociology is the study of
social life changes, social causes, and the social uh, repercussions of human actions. It is also addressing the connection between contemporary society and the environment. That is the this is how the sociology or जिसको हम समाज शास्त्र करते हैं affects the environment. Ecology and human relationship studies are involved closely in environmental science, and the social and moral values are continuously degrading due to declining ancient moral value. जैसे जैसे sociology का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भावनाएं दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं। सामाजिक एवं नैतिक नैतिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, और प्राचीन नैतिक मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं। पहले वृक्ष को काटना, नष्ट करना पाप समझा जाता था, नदियों पर्वतों की पूजा की जाती थी। पूजा अब भी की जाती है, बट इतनी सिंबॉलिक हो गई है नदियों को बर्बाद करने में, पर्वतों को काटने, तोड़ने, हर तरह से एनवायरनमेंट को खत्म करना आज समाज में हर रूप में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया है। नदियों में वेस्ट डालना, नदियों को पोल्यूट करना, माउंटेन्स को ब्रेक करना, तोड़ना। So many natural disorders are the results of all these hazards. So this is about the sociology. Then comes the statistics, the study of quantitative data collection, analysis, interpretation, and presentation that plays great role in the environmental studies. Environment के बारे में informations में ये सारे data collections and analytics बहुत help करते हैं. It is also used to evaluate data in order to find trends and recommend the optimal environmental growth. Then comes the history. History में भी environment का close association है। कई सभ्यताओं that many civilizations जिनको हम history से जानते हैं, fossils से जानते हैं, ancient available materials से जानते हैं, जो आज के दिन में गर्भ में जमाने के गर्भ में समा गए हैं। That is societies, a lot of rise and fall of many civilizations we know in the history that are done. ये जो evolution हुआ, rise हुआ है या fall हुआ है, environment plays a very important role in this rise and fall of all these communities. Role of environment is paramount in rise and fall of many civilizations that has been probably created by the environmental imbalance, and that have resulted into the perishing of a number of ancient civilizations. So this is with the history. Then is the law and environmental studies. Very important fact, आज के समय के लिए बहुत ही important है ये जानना कितने तरह के कानून बने हैं, कितने तरह के acts बनाए गए हैं. Many rules and acts have been established for environmental protections. There are a number of rules and acts, 6 of which are very important for the protection. That are the EPA, that is Environment Protection Law, established in 1986. FCA, Forest Conservation Act, established 1980. Wildlife Protection Act, WPA, sorry, it is established in 1972. Then Water Prevention and Control of Pollution Act, WPCPA, 1974. Prevention and Control of Air Pollution Act, APPCA, 1981. And the oldest law is Indian Forest Act, specifically in India. It is IFA, started in 1927. So these are some of the science or the areas that then the medical science. Medical science में जो मेडिकल डॉक्टरी की डिग्री दी जा रही थी, उसके अलावा बिल्कुल अलग से एक एनवायरमेंटल मेडिकल साइंस स्टैब्लिश किया गया है. इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी, इट इटसेल्फ इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी field involving medicines, environment, and is the study of effects upon the
human being of external, physical, it will be the effects. So it should be the effects. I think. Upon human being of external, physical, chemical, and biological factors in general environment. Environmental physicians focus on diagnosis and management of adverse health effects related to physical and chemical factors of environment. This field endeavors to learn about how the environment affects people with the end goal of promoting healthier lives. Medical science है तो healthy life से related है, और इस साइंस में हर तरह के जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं उनको यूनाइट करके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी जीवन कैसे बनाया जा सके लाइफ में, अर्थ पर, उस एरिया में वर्क हो रहा है. So these are some of the details. Then some more, these are some more areas. You know about all these areas. आप अपने लैंग्वेज में इसको दे सकती हैं. बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस को केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करके एनवायरमेंटल साइंस से रिलेट किया जाता है. माइक्रोबायोलॉजी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं. बैक्टीरिया, वायरसेस, आज जितने सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हो रहे हैं जिनकी वजह से आए दिन नई नई बीमारियां, नए नए वायरल इन्फेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बारे में उन स्टडी करके उनको एनवायरनमेंट से रिलेट करके उनको इम्प्रूवमेंट, माइक्रोबायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का फील्ड होगा. देन एजुकेशन, एजुकेशन हर तरह से एनवायरनमेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी तो एजुकेशन ही हो रह गया है. पहले हम एजुकेट करें खुद को भी दूसरों को भी कि एनवायरनमेंट को ख़त्म होने से हम कैसे बचाएं, पानी बचाएं, हवा बचाएं, पृथ्वी बचाएं, सॉइल बचाएं, केमिकल आर्टिफिशियल थिंग्स से, प्लास्टिक से धरती को बचाएं. देन इज द बायोटेक्नोलॉजी. इन सारे काम के लिए मॉडर्न साइंस में टेक्नोलॉजीज आए हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अभी डीएनए रिलेटेड, जीन पर जितने काम हो रहे हैं, that are mainly included in the biotechnology. Then mathematics is there, earth science is there, atmospheric science is there, mass communication and journalism is there. Then a number of applied areas जो practically apply करते हैं हर field में. Then is the last but not the least, the engineering and technology. That includes the civil engineering, chemical engineering, hydraulics, nanotechnology, and many more fields of studies related and being related to the environment where we live. इस जमीन को, इस कुदरत को, इस प्रकृति को बचाने के लिए वातावरण को, पर्यावरण को बचाना होगा. And that is our motto. That should be our motto. So thank you. Do like, share and subscribe the channel if you like it. Share it to reach more and more people. Press the bell icon to get the notifications of upcoming videos. Thank you. Thank you so much.